सो हेलो बच्चों, अब सबकी डिमांड थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ थोरैक्स, तो मैं लेके आया हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ थोरैक्स. लेट अस सी व्हाट ऑल टॉपिक्स शुड बी कवर्ड इन द थोरैक्स. चलो लेट अस स्टार्ट. So as far as SAQs are concerned, very important topic, bronchopulmonary segments. Bronchopulmonary segments, so you have to write about the right lung, left lung, the lobes, fissures. You have to write about the bronchopulmonary segments in each lung, the clinical importance of the bronchopulmonary segments, what is the one which helps you to define a bronchopulmonary segment. That's the pulmonary vein. If you trace the pulmonary vein, you can define a bronchopulmonary segment. Its clinical implication, like which bronchopulmonary segment is more affected in aspiration pneumonia, which is more affected in foreign body aspirations, right? So ये बहुत important है. Or if a foreign body enters the nose, fine. So bronchopulmonary segments, draw, label. कभी कभी ऐसे भी आता है, draw and label the bronchopulmonary segments of the right and left lung. So you have to draw, अच्छे से draw करना है, put it in a box, write bronchopulmonary segments, label करिए उसको at the sides of the box, right? No haphazard labeling, fine. Now the second question, azygous vein. Azygous vein, how it is formed? Formation of azygous vein, lumbar azygous, how it enters the thorax, which aortic opening of the diaphragm, how the azygous vein lies on the right side, arches over the hilum of the right lung, enters into the SVC at T4, फिर उसके tributaries of azygous vein. ठीक है. Obstruction to the azygous vein is not asked in UG, वो PG level सवाल है. Obstruction to the SVC below the opening and above the opening of azygous vein, that's a PG level. ठीक है. So that's azygous vein. The tributaries of azygous vein, very important. इस पे MCQs भी आते हैं. So azygous vein is very important. Now coming to the next, intercostal nerve. Intercostal nerve is another very important short note. What is intercostal nerve? It is the ventral ramus of a thoracic spinal nerve. It runs between which muscles? The internal and innermost intercostals. Its course, and then how it terminates as the anterior cutaneous nerve. फिर उसके branches होते हैं intercostal nerve के. What it supplies, that you have to write. What is a typical intercostal nerve? Which is an atypical intercostal nerve? 3 to 6 are typical, rest are atypical. What is intercostobrachial nerve? ये भी आपको लिखना है. फिर उसका clinical implication you have to write about herpes zoster. Herpes zoster, that's viral infection of the intercostal nerve, herpes zoster. So that's about the intercostal nerve. Coming to the next one, movements of respiration. Very very important short note, movements of respiration. इसमें you have to write the various joint which are formed by the ribs. ये पता है ना? Costovertebral, costovertebral, फिर costotransverse and costosternal or contosternal, and then the various movements of respiration, the bucket handle movement, the pump handle movement. इससे कौन से diameters change होते हैं? And the third is contraction of diaphragm, which increases the vertical diameter of the thorax. So this is very very important, movements of respiration and the various diameters which are changed during respiration. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? Then root of the lung, you have to draw the hilum of the lung, the various structures present at the hilum, anterior to posterior, superior to inferior structures present at the root of the lung. Then what are the structures which arches over the hilum of the lung, anterior posterior relations of the hilum or the root of the lung. Impressions on the mediastinal surface of the left and right lung, ये भी हमेशा आता है, ये भी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है. What are the impressions on the mediastinal surface of right lung, left lung? ठीक है, very important. Now coming to the heart, then pericardial sinuses, the transverse sinus, the oblique sinus of pericardium, ये कैसे बनता है? And what is the importance of the sinus? Like transverse sinus, you can pass a ligature to tie the ascending aorta, and oblique sinus helps for the distension of the right atrium. Oblique sinus lies behind the left atrium, lies behind the left atrium. It helps in distension of the left atrium during increased venous return. So these are the pericardial sinuses that you have to know. Coming to the next one, right atrium. Yes, right atrium is very important. First you have to
ग्रॉस उसका लिखना है एक्सटीरियर ऑफ राइट एट्रियम, देन यू कट द राइट एट्रियम फ्रॉम अ लाइन जॉइनिंग द एसवीसी टू आईवीसी, दैट सल्कस टर्मिनालिस, उसको ओपन करते हैं, रफ पार्ट स्मूथ पार्ट के बारे में लिखते हैं, व्हाट यू गेट इन द स्मूथ पार्ट, व्हाट यू गेट इन द रफ पार्ट, एंड हाउ इज द राइट एट्रियम डेवलप्ड, डेवलपमेंट भी पूछते हैं, हाँ, डेवलपमेंट ऑफ राइट एट्रियम। फिर डेवलपमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स लाइक आर्च ऑफ एओर्टा कैसे डेवलप होता है, ये एमसीक्यूज में भी आता है, सबक्लेवियन आर्टरी लेफ्ट राइट, हाँ, दिस कैन बी आस्क्ड इन एसएक्यूज, और एओर्टिक आर्च आर्टरीज ऐसे शॉर्ट नोट आता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स और एओर्टिक आर्च आर्टरीज, डेवलपमेंट ऑफ एसबीसी वेन, हाँ, द सुपीरियर वीना कावा, वो भी आता है। फैलेट सेट्रोलॉजी, हाँ, what are the four conditions that you get in Fallot tetralogy that you have to know? Pulmonary stenosis, right ventricular hypertrophy, then yes, pulmonary stenosis is the septum shifts to the right side, so pulmonary stenosis हो गया, because of pulmonary stenosis right ventricular hypertrophy, because of that interventricular septal defect हो गया, and then there is overriding of aorta, that's Fallot tetralogy। वो कैसे फॉर्म होता है, जब ये एओर्टिक को पल्मोनरी सेप्टम बनता है, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स उसमें जाते हैं, सपोज इफ द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स डज नॉट एंटर द एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम, द सेप्टम शिफ्ट्स टू द राइट साइड लीडिंग टू pulmonary stenosis and subsequently the conditions which leads to Fallot tetralogy। ठीक है, ये ओनली इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस कर रहे हैं, एंड व्हाट यू आर सपोज टू राइट इन दैट वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। फॉर मोर डिटेल्ड यू कैन ऑलवेज सी द लेक्चर्स। thoracic duct, yes, another very important thing is thoracic duct, वो कैसे सिस्टर्ना काइली से शुरू होती है at T12 vertebrae, how it enters the thorax through the aortic opening, पहले वो yes पता है ना, thoracic duct पहले वो राइट साइड पे होती है, then it shifts to the left side at T5, it crosses to the left side, then goes up and opens at the junction of left internal jugular and left subclavian vein। फिर उसके ट्रिब्यूटरीज आपको लिखना है, लेफ्ट ब्रोंकोमीडियास्टिनल, लेफ्ट सबक्लेवियन लिम्फ ट्रंक एंड लेफ्ट जुगुलर लिम्फ ट्रंक, इसके बारे में लिखना है। सो दीज आर द एसएक्यूज दैट इज आस्क्ड इन द थोरैक्स। ठीक है बच्चों, नाउ कमिंग टू द एलएक्यू। एलएक्यू हमेशा डिस्क्राइब अंडर द फॉलोइंग हेड्स, डिस्क्राइब इंटरकॉस्टल स्पेस अंडर द फॉलोइंग हेड्स लाइक मसल्स, वेसल्स, नर्व्स, ऐसे आएगा। सो इंटरकॉस्टल स्पेस इज अ वेरी बिग एलएक्यू टू राइट। What is the intercostal space लिखना है, the space between the two ribs। फिर उसके muscles लिखना है, external, internal, innermost or the transverse thoracicus muscle। Then you have to write about the arteries, the veins, the intercostal nerve के clinical applications। ठीक है, so intercostal space बच्चों मैं हमेशा बोलता हूँ when you prepare an LAQ many SAQs are automatically done। like when you prepare an intercostal space तो azygous vein हो गया उसके साथ, intercostal nerve हो गया उसके साथ, राइट, मसल्स हो गए, मूवमेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन हो गए along with the intercostal space। Another very important topic is the pleura। Pleura, the types, the parietal, visceral pleura, the types of parietal pleurae, the nerve supply of the parietal and the visceral pleura, the various recesses of pleura, costomediastinal, costodiaphragmatic recess, the various lines of pleural reflection, the costomediastinal line of reflection, the costovertebral line of pleural reflection, ये आपको याद रखना है, एंड उसका क्लिनिकल लिखना है, प्लूरल एफ्यूजन, प्लूरेसी, एंड हाउ डू यू ड्रेन द प्लूरल एफ्यूजन। सो प्लूरा इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सटेंट ऑफ लंग आप लिखोगे, एक्सटेंट ऑफ प्लूरा आपको लिखना है। हाँ, एक्सटेंट ऑफ लंग क्या होता है बच्चे, 6, 8, 10, प्लूरा इज 8, 10, 12 रिब्स इन द मिड clavicular, mid axillary and mid scapular line। Fine, then you get an LAQ on coronary circulation। coronary circulation मतलब you have to write about the right coronary artery, उसका course, उसके branches, उसका distribution, left coronary artery, उसका course, उसके branches, उसकी distribution, right, and then this completes the arterial supply, and then you have to write about the venous drainage of the heart, which veins are present in which groove, what is coronary sinus, and then उसके clinical applications लिखने आपको, right, atherosclerosis, angiography, angioplasty, bypass। Fine, so that's about the coronary circulation। ये सब हमने details में पढ़ा है lectures में, you can go to the lectures, you can look at the lectures। Coming to the mediastinum, mediastinum is another very important topic, superior mediastinum, inferior mediastinum, boundaries of mediastinum, superior mediastinum के 3 parts, inferior mediastinum के 3 parts, and what all do you get in the mediastinum, the contents of mediastinum, mediastinal syndrome, ये आपको याद रखना है। So mediastinum is very important, and finally coming to the diaphragm। diaphragm में
the origin of diaphragm, ठीक है ना, what all origin, then insertion of the diaphragm, फिर openings in the diaphragm, openings, major opening, minor opening. फिर diaphragm का embryology is also very important. Embryologically how the diaphragm is formed, what is Bogdelik's hernia, and the nerve supply of diaphragm. The central part phrenic, I mean the entire motor supply is phrenic now, sensory nerve supply in the center is phrenic, peripheral is intercostal nerves. And then something about the clinical anatomy of diaphragm, you have to write eventration of diaphragm. फिर hernias के बारे में लिखना है, diaphragmatic hernias के बारे में, sliding hernia, rolling hernia. So that's about the LAQs बच्चों, ठीक है. So this is about the LAQs of the thorax and this is about the SAQs of the thorax. So this is what is asked in the thorax. Detailed lectures batches में देख लो. This is just a quick orientation to what important topics can be asked in the thorax. वैसे important topics of upper limb and lower limb के भी videos मैंने बनाए हैं. You can see those important list of important topics of upper limb and lower limb. But you can follow me on my Telegram channel, on my Instagram channel, and that's my YouTube channel. Instagram पे I put small reels, educational reels, short Viva educational reels. ठीक है बच्चों, I hope this is clear to all of you. In case of doubts, do get back to me. Thank you so much. Thank you.